Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jhareshwar, Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7 Maths, and our chapter is Ratio and Proportion. Okay, this our chapter is comparing quantities. Okay, in this chapter we learn about ratio. Okay, two numbers or quantity can be compared in two ways, that is either by subtraction or by division. Okay, so ratio is way to comparing two numbers by division. For example, suppose the recommended number of water lilies approximately for 8 square meter pond is 1. So we can say that number of water lilies means 1 upon area of pond means 8. Okay, अंडरस्टैंड मीन्स 8 स्क्वायर मीटर में फैले हुए पॉन्ड में नंबर ऑफ वाटर लिलीज कितनी हो रही हैं? एक हो रही है, ओनली 1. ओके, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ वाटर लिली टू एरिया ऑफ पॉन्ड आर इन द रेशियो मीन्स 1:8. द सिम्बॉल, हम कौन सा सिम्बॉल यूज़ करते हैं बच्चों इसके लिए? ये वाला सिम्बॉल हम यूज़ करते हैं, 2 dots. ओके, वी यूज़ 2 dots टू denote the ratio, and we read it is 2. Okay, understand? And first term is called antecedent and second term is called consequent. Okay, so there are two terms, that is antecedent and consequent. Okay, understand? And ratio is in simplest form. A ratio is said to be in its simplest form or in lowest term when its terms do not have a common factor other than 1. Okay, understand? So yesterday we have talked about the ratio and how to write down the ratio of any number. Okay, now we talk about what is equivalent ratio. Okay, so before we learn equivalent ratio, first of all we know what is simplest form of the ratio. It is always recommended to write the ratio in its simplest form. And what is the simplest form? When we write the ratio in ratio is said to be in simplest form or in lowest term when its term do not have a common factor except 1. Okay, understand? Now let's see the example first. Find the ratio of 3 kilometer to 300 meter. Here one is in kilometer and another one is in meter. So remember one thing, we always compare quantity of same kind. Okay, मीन्स अगर वो किलोमीटर है तो वो दोनों नंबर किलोमीटर्स में ही होना चाहिए, यूनिट उनकी सेम होनी चाहिए. अगर मीटर्स में है तो वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 3 kilometer into meter. Okay, so 1 kilometer is equal to 1000 meter, so you have to multiply 3 into 1000. Okay, so you can get 3000 meter. So your required ratio is 3 kilometer means 3000 is to 300, that is 10:1. Okay, and we always compare quantity with same unit. Okay, understand? And ratio have no unit. रेशो की कोई अपनी एक यूनिट नहीं होती है. ओके, दिस मीन्स डेट यू कैन कंपेयर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विथ दैट ऑफ अ मैन इफ बोथ हाइट आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड नॉट इन if one is expressed in meter and another one is expressed in centimeter. Okay, so you do not compare that type of data. First of all you have to convert into it into same unit, then you have to compare. Okay, understand? So first these two things you have to remember in ratio in this chapter. Okay, and then we can learn equivalent ratio. Okay, to find whether the two given ratios are equivalent or not, we write them in the form of fraction. ओके, हम उन्हें कैसे लिख लेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में. अगर हमें दिया हुआ है 3:2 तो हम 3:2 को कैसे लिखेंगे बच्चों? फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे.
So we can write 3:2, हम उसे लिखेंगे 3/2. Okay, understand? And if these fraction are equal, so they are equivalent ratio. Okay, so are the ratio, two ratio that have the same value are the equivalent ratio. Okay, understand? So what we learn in this chapter, in general the ratio of two number a and b, we can denote a is to b or a upon b. Okay, and where a and b are two quantities and a is called, अगर a is to b के फॉर्म में हम लिख रहे हैं उसे, so a is called antecedent and b is called consequent. Okay, a ratio does not have a unit itself. Okay, remember this thing. And to compare two quantities, the unit must be same. Okay, a ratio obtained by multiplying or dividing both the terms of a given ratio by the same non-zero number is called the equivalent ratio. Okay, understand? So we can say they are equivalent ratio. And see the example. If we see the example, then you have to understand what I can say. Are the two ratio 1:2 and 2:3 are equivalent? To check this, we need to know whether 1/2 or 2/3 are equal. So in fraction chapter we learn if two fractions are equal or not. Okay, so what method we use? We use same the denominator. Okay, here 2 and 3 both have different denominators, so we have what we have doing, first we have LCM them, मतलब LCM निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का. So our LCM 2 and 3 का LCM होता है 6, so we multiply 1/2 into 3. Okay, in both numerator and denominator, so we can get 3/6. And again 2/3 में भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे to become denominator 6. Okay, so हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 6 बन जाए. So we can get 4/6 and 3/6 is less than 4/6, which means 1/2 is less than 2/3. So therefore the ratio 1/2 and 2/3, 2:3 is not equivalent ratio. Okay, so this way you have to find two ratios are equivalent or not. Okay, understand? Now see the example number 3. Following is the performance of cricket team in the match is played. Okay, last year 8, 2 loss, 4, 2 loss. Okay, so last year win matches कितने हैं, win is to loss, win हुए हैं 8 and loss कितने हुए हैं 2. This year 4 win हुए हैं and 2 losses हुए हैं. Okay, so these are also not equivalent. Okay, understand? So keeping thing in proportion and getting solution. Now see student, जब हमने बोला कि दो रेशो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, दैट मीन्स अगर वो इक्विवेलेंट हैं दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड? अगर दो रेशो इक्विवेलेंट हैं, so we can say that a ratio they are equivalent ratio, then they are in proportion. Okay, understand? So and we a ratio obtained by multiplying or dividing both the same term of a given ratio by the same non-zero number is called the equivalent ratio. Okay, understand? So हम इक्विवेलेंट रेशो किसे कहेंगे, जब हम सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके उसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ सी हियर, इफ़ यू वांट टू कीपिंग थिंग्स इन प्रपोर्शन एंड गेटिंग सॉल्यूशन. अब हम प्रपोर्शन में हम किस टाइप से रख सकते हैं, अगर दो रेशो आपस में इक्वल हैं तो हम उसे लिख सकते हैं दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड? सो अरुणा मेड अ स्केच ऑफ बिल्डिंग. She lied in and drew sketch of her mother standing beside the building. Mona said there seemed to be something wrong with the drawing. Okay, can you say that is what is wrong? What
हाउ कैन यू से दिस? सो इसमें रॉन्ग क्या है? सो सी द हाइट ऑफ द मदर. Okay, in the case the ratio of height in the drawing should be the same as the ratio of actual height. That is, actual height of building upon actual height of mother is equal to height of building in drawing upon height of mother in drawing. Okay, so यहाँ पर बिल्डिंग से, जहाँ पर बिल्डिंग का गेट है उससे हाइट बड़ी दिख रही है मदर की. ओके, ओनली देन वुड दिस be in proportion. Often when proportion are maintained the drawing seem pleasing to the eye. अब हमें ड्राइंग देख कर के क्या गलत दिख रहा है? उसमें जो मदर की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है जो ड्राइंग घर की बनी हुई है उससे. देखो आप ज़रा ध्यान से. ओके, सो अनदर एग्जाम्पल वेयर proportion आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ नेशनल फ्लैग. हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 4 एंड सी हाउ टू टू नंबर्स हैविंग इन प्रपोर्शन. ओके, अ मैप इज गिवन with a scale of 2 centimeter is equal to 100 kilometer. What is the actual distance between the two places in kilometer? If the distance in the map is 2.5 centimeter. ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर आपको मैप में लेना है. ओके, और अगर कोई डिस्टेंस आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? अरुण डज इट लाइक दिस, मीन्स लेट डिस्टेंस विल बी एक्स. सो 1000 इज टू एक्स इज इक्वल टू 2 इज टू 2.5. ओके, दोनों सेंटीमीटर्स उसने साथ में रख लिए, दोनों डिस्टेंस उसने साथ में रख लिए. 1002 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. ओके, एंड 2.5 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? तो उसने इस टाइप से रख लिया. सो 1000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2.5. सो यू हैव फाइंड व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एक्स इज 1250. ओके, एंड मीरा डज इट लाइक दिस. 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर. सो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1000 अपॉन 2. ओके, सो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 इंटू 2.5 किलोमीटर. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. ओके, जो मीरा ने करी है उस मेथड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिटरी मेथड. मतलब उसने पहले क्या किया? 1 सेंटीमीटर का फाइंड किया, यूनिट सेंटीमीटर्स का फाइंड कर लिया उसने. एंड देन यू हैव टू फाइंड सो मैनी सेंटीमीटर. जितने सेंटीमीटर का आप चाहते हो उसको आप फाइंड कर सकते हो. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5. 6 बाउल कॉस्ट ₹90. What would be the cost of 10 such bowls? So you can do 6 bowl का cost is ₹90. तो 1 bowl का cost कितना हुआ? 90 upon 6. So 10 bowl का cost 90 upon 6 into 10. So your answer is 150. Okay, understand? So this way you find the answer of this type of question. Now see the example number 6 also. The car that I own can go 150 km with 25 liter of petrol. How far can it go with 30 liter of petrol? With 25 लीटर में कितना चल रही हो? 150. तो 1 लीटर में कितना चलेगी? 150 अपॉन 25. ओके, सो हैज़ 30 लीटर में कितना चलेगी? 150 अपॉन 25 इंटू 30. Okay, understand? So this way you have to find the question. And let's do exercise 8.1. Find the ratio of ₹5 to ₹50 पैसा. Okay, so 5 rupees को आपको you have to convert rupees into पैसे. First you have to convert rupees into paise, means 1 rupees is equal to, 1 rupees is equal to 100 paise. Okay, so 5 rupees is equal to 5 into 100, that is 500 paise. Okay, so what is the ratio? 5 rupees means 500 is to 50. So you can write it 500 upon 50. 0 से 0 कटेगा. So you can write 10 is to 1.
Okay, understand? So this way you can write the answer. Now 15 kg to 210 gram. So here one is in gram and one is in kg. So first you have to convert kg into gram. Okay, so it's 15 kg is equal to 15 into 1000 gram. So it becomes 15,000 gram. So you can write 15,000 is to 210. Okay, so your answer is 15,000 upon 210. 3 sevens are 21, 3 fives are 15. अगेन 7 से कट होगा तो कट करिए और आपका आंसर लिखिए. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू कंप्लीट in this way. Now second question, in a computer lab there are 3 computers for every 6 student. How many computer will he needed for 24 student? How many computer will he needed for 24 student? See, 3 computer हैं for every 6 student. So 1 student के लिए कितना होगा? 6/3. Okay, understand? So for 24 student 6/3 into 24. Okay, understand? So this way you complete the question number 2. Okay, now question number 3 is population of Rajasthan is 570 lakh and population of UP is 1660 lakh. Area of Rajasthan is equal to 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. So how many people are there per kilometer square in both these states? Okay, so how to find the area? How to find the area of these? So what can you do? आपको दिया हुआ है कि राजस्थान में पॉपुलेशन कितनी है एंड राजस्थान की पॉपुलेशन यू नो एंड एरिया यू नो. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट, राइट डाउन इट इन प्रपोर्शन एंड okay. So what you can do for Rajasthan, population is 570 lakh and area is 3 lakh kilometer square. So population per kilometer में कितना हो जाएगा? 570/3. So 190 lakh per kilometer. Okay, so 190 lakh 1 किलोमीटर में है तो 1660 lakh में कितना होगा? तो 1660 हमें पता चल गया 190 lakh पर किलोमीटर. ओके, फॉर यूपी के लिए 1660/2. सो यू कैन गेट 830 lakh पर किलोमीटर. ओके, सो 190 lakh इज लेस देन 830 lakh. सो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट. राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट एंड यूपी इज मोर पॉपुलेटेड स्टेट. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे you complete the question 3. So you complete this question exercise 8.1 in your notebook. Okay, understand? Have a good day.